Dear students, today we will discuss about class 9 maths exercise 1.1. Question number 1. Is 0 a rational number? Can you write it in the form of P upon Q where P and Q are integers and Q is not equals to 0? So हमें पता है कि 0 एक रेशनल नंबर है. Yes, because 0 is a रेशनल नंबर. 0 एक रेशनल नंबर क्यों है? बिकॉज वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, क्योंकि हम 0 किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में. जैसे 0 जब इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो वी कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1. 0 अपॉन 2 और क्या क्या लिख सकते हैं हम इसे? कोई भी इंटीजर की फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं. वी कैन रिटन ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. सो वी कैन written 0 in the form of P upon Q where Q is not equal to 0. So it is a rational number. Next question, question number 2. Find 6 rational number between 3 and 4. So we will already discuss in earlier classes. We have learned about number line and the representation of various type of numbers like natural numbers, integers and rational numbers on the number line. In this chapter we will study rational number as terminating numbers and the existence of non-rational numbers as irrational numbers such as root 2 and root 3 and their representation on the number line. So in this question we will discuss the numbers between two rational numbers. The number lies between two rational numbers. तो हमें दो रेशनल नंबर्स के बीच के नंबर फाइंड करने हैं. वेयर 3 and 4. हमें दो रेशनल नंबर दिए 3 and 4. अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वी कैन टेक 1 and 1. 3 upon 1, 4 upon 1. हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन फाइंड बिटवीन दैम? 6. वी कैन फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन दैम. तो जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने होते हैं उसमें हम क्या कर देते हैं? 1 ऐड कर देते हैं. तो ऐड करने पे जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर नीचे करते हैं इन द दोनों रेशनल नंबर्स में. तो 3 upon 1 नंबर क्या है यहाँ पर? 7. 7 कैसे आया? जितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने होते हैं उसमें 1 ऐड करके ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मीन 7 upon 7. तो व्हाट वी कैन फाइंड? 7 3 21, 7 1 7. देन 4 upon 1. अगला रेशनल नंबर है 4 upon 1. इसमें भी हम 7 upon 7 सेम डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 4 7 28, then 7 1 7. तो व्हाट वी कैन फाइंड टू रेशनल नंबर? 21 upon 7 and second is 28 upon 7. So we can find 6 rational number between them. 22 upon 7, second is 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7 and 27 upon 7. They are the 6 rational number lies between 3 and 4. Next question number 3rd. Find 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5. How can we find 3 upon 5 and 4 upon 5? How many rational number can find between them? 5. Then first of all there is a denominator in both of them, 5 and 5. Same rational number, same denominator between both rational numbers. So how many rational number can find in between them? 5. Then 5 plus 1 is equal to 6. So what we do now, we will multiply and divide by 6 in both the rational numbers. So we will multiply 6 in numerator and 6 in denominator. What we can find out? 18 upon 30. Then same here, 6 upon 6, 24 upon 30. So how many rational number can find between both of them? 18 upon 30 and 24 upon 30. Then 18 upon 30 between 24 upon 30. So there is 5 rational number. First is 19 upon 30, second is 20 upon 30, third is 21 upon 30, fourth is 22 upon 30, fifth is 23 upon 30.
what we can written 20, 21 and 22 is also in simplest form. 19 upon 30, 0 to 0 cancel, 2 upon 3, 21 is cancelled by 3 and 30, 3 7 is 21, 3 10 is 30. From 2, 22 and 30 is cancelled by 2, it is 11 times and it is 15 times, and there is same, it is not cancelled by anything. So they are the 5 rational number between 3 upon 5 and 4 upon 5. Then next question is question number 4. State whether following statements are true or false. Give reason for your answer. First, every natural number is a whole number. First is, every natural number is a whole number. Yes, because true. Why? Because natural number starts from 1. Natural number starts from 1 to infinity, and whole numbers start from 0 to infinity. So all natural number include in whole numbers. So it is true that every natural number is a whole number. Second part, every integer is a whole number. False, because every integer is not a whole number, because integers include all negative and all positive numbers. Minus infinity to 0, then 0 to positive infinity, and whole numbers contain only positive numbers. So every integer is a whole number. सारे इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं. सॉरी, सारे इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते, क्योंकि इसमें नेगेटिव भी इंक्लूड है, पॉजिटिव भी है और ज़ीरो भी है, और होल नंबर्स में केवल पॉजिटिव नंबर्स आते हैं. सो डेट्स वाई इट इज़ फॉल्स दैट एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर. देन लास्ट पार्ट, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर. क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर में होते हैं? फॉल्स, बिकॉज rational number, we can retain the rational number in the form of p upon q, where q is not equal to 0. False, because we can retain the rational number in the form of p upon q where q is not equal to 0, but whole numbers contain only numerators. Whole numbers, in the whole numbers there is not any denominator, so we cannot retain in the form of p upon q. So we cannot say that every rational number is a whole number.